Bismillahirrahmanirrahim. We are discussing the determination of national income, the Keynesian model for simple and two-sector economy. We have studied this in class. Now we are discussing inflationary and deflationary gaps. Okay, so what is an inflationary and deflationary gaps? So we say we have told that national income is determined where aggregate demand is equal to aggregate supply. We have told that national income is in equilibrium when aggregate demand is equal to aggregate. So for the determination of national income, there are two approaches. One is known as aggregate demand, aggregate supply approach, and the second is known as leakage and injection approach. Okay, so the national income is determined where aggregate demand is equal to aggregate supply. So look at this curve. This curve is so we have draw a 45 degree curve, which is known as national income as a supply aggregate supply line. Okay, so because on the both axes we measured the national income, so it will be a 45 angle line. Okay, अच्छा जी. Now we draw aggregate demand curve. So if we draw aggregate demand curve, so this is if I draw this, let's suppose this is C. This is C curve. Okay, so this will be equal to C plus I. If this is equal to C, then this is equal to C plus, this is equal to C plus I. Okay, this is equal to C plus I. So this is aggregate supply demand. Sorry. Okay, aggregate demand is equal to what? Aggregate demand is equal to C plus I. Okay, and aggregate supply is equal to C plus S. Okay, so this is your equilibrium level of national income. Where equilibrium level of national income will be determined, this will be your equilibrium level of national income. Okay, this thing is this particular national income, y steric, is known as equilibrium level of national income. Okay, this will be your equilibrium level of national income on whatsoever is the consumption. This is the equilibrium level of consumption. If you go over there, this is your C. This is your C steric. This is your equilibrium consumption, and this is the बिल्कुल आप पैरेलल लेके जाएं. ठीक है, दिस इज योर व्हाट, ये आप लोगों की क्या हो गई? एग्रीगेट डिमांड हो गई C plus I. ठीक है, सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम. अब मैंने क्या करना है इसमें, लेट्स सपोज इसमें मैंने अभी इन्फ्लेशन का जिक्र करना है. ठीक है, इसमें इन्फ्लेशन को कारपोरेट करते हैं. नाउ व्हाट इज द व्यू ऑफ कीन्स. कीन्स का क्या व्यू है इन्फ्लेशन के बारे में? ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में वो क्या कहता है? ठीक है, कंट्रोल जी कर लेते हैं. ओके, नाउ कीन्स सेज, अगर यहाँ पर ये अगर लेट्स सपोज करते हैं, if equilibrium level of national income is equal to full employment. ठीक है, when we say when aggregate demand is equal to aggregate supply. ठीक है, so the national income is equilibrium level of national income. Okay, so Keynes said there will be neither inflation nor deflation. What point, ये remember, ये point याद रखें. What is the view of Keynes? Keynes say that when equilibrium level of national income y steric is equal to yf,
when equilibrium level of national income is equal to full employment level of national income, so there will be neither inflation nor deflation. ना इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑफ प्राइसेस। इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? जब प्राइसेस इंक्रीज करती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? when prices increases, when there is increase in the prices, it is called inflation. okay, deflation क्या चीज है? deflation, what is deflation? ठीक है, इसको when price decreases. so according to Keynes, when aggregate demand is equal to aggregate supply, and when there is an equilibrium, ठीक है, at the equilibrium level of national income is equal to full employment, so there will be neither inflation nor deflation. okay, so इस केस में ना इन्फ्लेशन होगी ना डिफ्लेशन होगी. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप. ओके, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था, मैंने बयान कर दिया. अब इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी गैप को जाते हैं, आगे देखते हैं. ठीक है, अच्छा, अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या है? इन्फ्लेशनरी केस कहते हैं अगर इक्विलिब्रियम पे, if we say if national income is determined and at the equilibrium if aggregate demand is greater than aggregate supply, ठीक है, there will be inflationary pressure gap. कहते हैं if national income is determined beyond full employment then there will be inflationary gap. ठीक है, थोड़ा सा समझाता हूँ. देखें इधर, यहाँ पर हमने कर लिया कि नेशनल इनकम डिटरमाइन है. यहाँ देखें इधर, यहाँ पर इस पॉइंट पे लेट सपोज ये मेरे पास ई पॉइंट है, E1. ठीक है, यहाँ पर नेशनल इनकम डिटरमाइन हो गई और फुल एम्प्लॉयमेंट है. ओके, अब कहते हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड इससे बढ़ गया, लेट सपोज ये एग्रीगेट डिमांड हो गया, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कर जाता है. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कर गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया और ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया. दिस इज लेट सपोज सी डैश. ठीक है, सी डैश प्लस आई, ठीक है, प्लस आई डैश, जो भी है. ठीक है, दिस इज योर न्यू एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, अब यहाँ पर इसको नेशनल इनकम जब देखते हैं तो यहाँ नेशनल इनकम क्या आती है? यहाँ नेशनल इनकम ये आ गई. ओके, दिस इज योर न्यू नेशनल इनकम. ओके, नाउ व्हाट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट? दिस इज एफ इज द फुल एम्प्लॉयमेंट, और फुल एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ गई है. तो दिस मीन एट फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कौन सी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है एग्रीगेट डिमांड is greater than aggregate supply at full employment. ठीक है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पर देखें इधर, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई इस एग्रीगेट सप्लाई से. ठीक है, या आप कह लें कि नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड beyond full employment. So Keynes says if national income is determined beyond full employment, it is then this gap, this particular gap, इस particular gap को क्या कहते हैं? This particular gap is called inflationary gap. It is what called? It is called inflationary gap. इसको हम क्या कहते हैं? Inflationary gap. वो कहते हैं यहाँ पर inflation आएगी. तो Keynes says कि inflation comes when national income increases beyond full employment. ठीक है, अब deflationary gap को जाते हैं. अच्छा, डिफ्लेशनरी गैप के बारे में क्या कहते हैं? इफ नेशनल इनकम डिटरमाइंस बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो किन्स कहते हैं देयर विल बी डिफ्लेशनरी गैप. क्या होगा फिर? डिफ्लेशन होगी, प्राइसेस कम होंगी. तो अब यहाँ पर तो फुल एम्प्लॉयमेंट थी हमारे पास. ठीक है, ये बाई हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट थी, वो चीज़ मिट गई है, वो मैं दोबारा लिख लूँगा. यहाँ देखें तो ये मैं अभी नेशनल इसमें कमी कर लेता हूँ एग्रीगेट डिमांड में. ओके, अब देखें मैं यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट से, ये फुल एम्प्लॉयमेंट थी, उससे मैं एग्रीगेट डिमांड कम करता हूँ. फुल एम्प्लॉयमेंट से एग्रीगेट डिमांड कम कर लेता हूँ. अब नेशनल इनकम को यहाँ पर E1 पे था पहले इक्विलिब्रियम, अब मैं यहाँ पर E2 में इक्विलिब्रियम कर लेता हूँ. ठीक है, तो अब नेशनल इनकम यहाँ पर डिटरमाइन हो गई. तो यहाँ पर ये जो गैप है फुल एम्प्लॉयमेंट पे और बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट पे, इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप. ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं।